नहीं नहीं, ठीक है, लोक अदालत तो एक बार देख लेते हैं फट से। देखो, लोक अदालत में क्या है, ऐसा हमने देखा, एलएसए 1987 के अंदर एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, आपके पैरालीगल एडवाइजर्स रहेंगे जो मदद करेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे जो मदद करेंगे। जुरिस्डिक्शन क्या है, प्री लिटिगेशन स्टेज में जो है वो तो जा ही सकते हैं। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में भी अगर कोई सा केस पेंडिंग है तो वो भी लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या होता है कि कई बार जैसे कोर्ट है तो उसमें कुछ केसेस आते हैं वेयर ब्रदर इज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रदर फॉर प्रॉपर्टी, राइट, वी नो, जो भी है ऐसा ही है। सो वो होता है, देन देयर आर डिवोर्स केसेस, राइट, देयर आर नंबर ऑफ केसेस, फैमिली मेंबर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो क्या होता है कि एक केस तो चल ही रहा है, उसके बाद है वीकेंड, कुछ वीकेंड्स पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी जाती है फॉर सर्टेन डेज, राइट, नॉट इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट वीकली या मंथली, इट इज पीरियोडिक। ठीक है, अब वो पीरियोडिक में जब लोक अदालत लगी, द पीपल हु आर फैमिली मेंबर्स दे कैन अप्रोच लोक अदालत एंड आस्क फॉर रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन है दे आर मे बी एबल टू रीच अ सेटलमेंट, एंड देन फिर वो उसको लगा देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि हमने लोक अदालत में तो इसको रिजोल्व कर लिया था। दिस इज व्हाट लोक अदालत इज फॉर। तो आप देखोगे नेचर ऑफ केसेस जो जाते हैं वो है सिविल केसेस, मेट्रीमोनियल केसेस, लैंड डिस्प्यूट, है ना, पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, एंड अरे इसको हटा दो, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, नॉन नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, 3 वर्ड्स आई थिंक आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट केसेस या क्राइम। एक कॉग्निजेंस होता है, ठीक है, एक कंपाउंडेबल होता है, राइट। अभी तो चलो दो में से आप कंपाउंडेबल ही बता दो, छोड़ो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस भी छोड़ो। कैन यू टेल मी व्हाट डज कंपाउंड मींस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस? ठीक है, और अपने अपने पीटी 365 में करेक्ट कर लेना, इट इज कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, नॉट नॉन कंपाउंडेबल, है ना। एनसीसी जो है उसको लोक अदालत डील नहीं करती, दे ओनली डील विद कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। कंपाउंडेबल मींस यू कैन बी जेल्ड। नहीं, ये है एक आफ्टर इफेक्ट बता दिया आपने। हाँ करेक्ट। देखो, कंपाउंडेबल का सिंपल सा मतलब यही रहता है दैट दीज केसेस दे कैन बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, हाँ, आप जिससे हो रही थी वो था बिलेबल, राइट। कंफ्यूजन हो, एस सी एस टी एक्ट में जाना और उसमें देखना है कि ऑफेंस का नेचर क्या है। देयर यू विल फाइंड 3 वर्ड्स, एक तो कंपाउंडेबल मिल जाएगा, एक मैंने कॉग्निजेंस भी बता ही दिया। उन तीनों वर्ड्स को एक बार सर्च क्या क्या होता है, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्राइम्स जो इंडिया में होते हैं। ठीक है, देयर आर जनरली 3 नेचर्स दैट वी एसोसिएट। एक तो हो गया कंपाउंडेबल, एक हो गया कॉग्निजेंस और एक हो गया बिलेबल, राइट। ठीक, कुछ टाइप कर रहा था, नहीं, ठीक है, आगे बढ़े। सो एज वी सी भैया, नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस है, नहीं सिर्फ कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस को हम कहीं ना कहीं लोक अदालत में एड्रेस कर सकते हैं। पावर्स जो है वो सिविल कोर्ट की है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जो डिसीजन है फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अब इसकी नो अपील का मतलब क्या है कि एक बार यहाँ पे डिसीजन आ गया, डन, डस्टेड। नो अपील का मतलब ये नहीं कि फिर आप कोर्ट को जा नहीं सकते। वो जो स्पेशल लीव पर टेंशन लगाते हैं ना, SLPs,
फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के आसपास आती है SLPs, राइट, जो आपकी क्यूरेटिव पिटिशंस रहती है, इन केस सब आप लगा सकते हो. नेवर थिंक दैट इफ देयर इज वर्ड दैट इज रिटन सच एज नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट इट्स अबाउट, इट मीन्स कि हम कोर्ट ही नहीं जा सकते. नहीं, कोर्ट हम जाएंगे, पर अब हम जाएंगे स्पेशल लीव पिटिशन के लिए. हम लोग को पिटिशंस लगाने पड़ेंगे. नेचुरल ऑर्डर में एक बार लोक अदालत का केस आ गया तो आप नेचुरली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि अरे अब ये हो गया, अब हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे. नहीं, ठीक है. और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को फांसी की सजा हुई. सो अब मुझे देखना पड़ेगा, आगे आता है नहीं, ये तो खैर आज का लास्ट आर्टिकल है, ज़रा टाइम नहीं लूंगा मैं. सो ये क्योंकि आज का लास्ट आर्टिकल है, तो जैसे फांसी की सजा हुई, वी मे बी रीडिंग अबाउट इट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल प्रोसीजर दिया था, है ना, डेथ एक्सिक्यूशन के लिए इन आई थिंक 2023 इटसेल्फ. तो क्या होता है कि इवन सुप्रीम कोर्ट सेज कि जब आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हो ना, इट इज अ वेरी सीवियर पेनल्टी दैट यू आर गिविंग टू अ पर्सन. यू आर बेसिकली सेइंग कि उसने फॉल्ट करा है एंड ही डिजर्व्स टू बी हैंग्ड. ये आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते. दिस गोज एट द लोअर मोस्ट लेवल. मतलब जांच करती है, फिर वो इस केस को लगा देती है कोर्ट में, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे आती है, ठीक है. तो उस कोर्ट में जाके पुलिस लगाती है कि दिस पर्सन नीड्स टू बी हैंग. अगर वो कोर्ट सुनाती है कि हाँ दिस पर्सन नीड्स टू बी हैंग, एक नेचुरल अपील प्रोसीजर है जिसके तहत द पर्सन मे गो इन हाई कोर्ट. देन हाई कोर्ट अगर से आना बोलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, राइट. दिस इज द नेचुरल प्रोसीजर दैट कैन बी फॉलोड. लोक अदालत में अगर लोक अदालत ने बोल दिया कि यार जो प्रॉपर्टी है वो तो ऐसे ही बटेगी, ठीक है, और उसने तो काफी जतन के बाद बोला, बिकॉज दिस इज अ वेरी, जैसे मैंने उस दिन सब्सिडरी डेवोल्यूशन की बात करी थी ना, सब्सिडरी डेवोल्यूशन, ये सिमिलर मेथड पे कि यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व है. सो एक बार डिसीजन आ गया, फाइनल और बाइंडिंग वाला हो जाता है वो. उसके बाद आपको हाई कोर्ट जाने का मतलब नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जजेस बैठे ही थे, उनके अंडर ही ये सब हुआ है. तो अगर आप हाई कोर्ट जाओगे, आप जाओगे स्पेशल पिटिशंस के थ्रू, नॉट इन अ नेचुरल ऑर्डर. ठीक है, ये क्लियर हो गया. सो अगर प्रीलिम्स के पेपर में आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि एक स्टेटमेंट आता है कि लोक अदालत का जो डिसीजन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, सो इट इज फॉल्स. यू कैन चैलेंज एनी डिसीजन, राइट. इवन सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव पिटीशन भी हम क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू कर सकते हैं. क्यूरेटिव पिटीशन का भी हम वापस क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द जस्टिस इन इंडिया इज. बट अगर वो बोलता है कि नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, वो फाइनल एंड बाइंडिंग है लोक अदालत का डिसीजन या अवार्ड. तो जो एंड का सेक्शन था थोड़ा सा लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही था. अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको. इफ देयर आर एनी डाउट्स, एक मिनट मैम को बोल देता हूँ मैं. मैम सबको अनम्यूट कर देना. इफ देयर आर एनी डाउट्स डू मेंशन, अदरवाइज इस सेशन को ओवर करें, राइट. हाँ, एनी डाउट्स नहीं है तो फिर ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर है तो पूछ लो. So from this particular portion that we're doing from PT 365, could you also share some PYQs? Prelims may to we know, but what kind of questions are asked in mains? So topics हम देख रहे हैं, आप बोल रहे हो कि from means point of view, are there any questions being asked or not, ऐसा? हाँ जी, PYQs mains में. ठीक है. आई लुक एट इट कि कितना हिट रेट रहा है मेंस का और PT 365 का, राइट. बिकॉज जनरली क्या होता है, मेंस 365 करके भी एक डॉक्यूमेंट निकलता है व्हेन यू आर गिविंग मेंस, सो उसी में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है. बट आई विल ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर relationship, that if there is any sort of
hit between mains and PT 365. Else I would say कि अभी because 3 महीने ही है, I would prefer कि आप मेंस पर उतना ध्यान मत दो, मेनली तो PYQ को ही फिगर आउट करो. स्टिल अगर कुछ ऐसा लगता है, यू मे DM टू अल्टीमेट मैम अबाउट कि मुझे मेंस के 1-2 PYQ चाहिए, एंड आई विल बी देन प्रोवाइडिंग हर द नेसेसरी whatever you ask for, right? Ati Murugan क्या बोल रहे हैं? Sir, can you explain the last topic about appeal and challenging Adalat? Okay. देखो अगेन मैं आपको एक उसको एक्सप्लेन करता हूँ. इंग्लिश ठीक है, मतलब इज इंग्लिश ओके, और यू वुड लाइक अ कंप्लीट? ठीक है. See, what I mean is that when a decision is given by, है ना, award and decision basically means same. In a very layman language, decision award means same thing. So when a decision is given by Lok Adalat, it is final and binding. What does it mean? That this decision, the pronouncement, the judicial pronouncement that the Lok Adalat is doing is final. The property between the two brothers have been divided in the ratio of 50:50. Cool. This is the award which would be binding, and this is how the concerned tehsildar, patwari, or whoever is managing the taluka related, okay, whoever is managing the taluka, the person concerned would be dividing the territory, the disputed territory, in 50:50 ratio. Okay, this is clear. What does final and binding means? And the administrative officials are also worried about it. Now, after the decision has finally arrived, why I'm saying administrative officials are told about it? Because the decision now cannot be appealed, because there is no provision. Once Lok Adalat said that a particular property is 50:50, there is no court where you can go to appeal. What we do get confused in our daily lives, right, when such decisions are challenged in High Court or Supreme Court, is by the provision of special leave petition. See, Supreme Court and our constitutional makers, they already knew that whatever we are proposing, या जो भी judiciary mechanism है, the process that the judiciary is going to follow and give its verdict with, people would be dissatisfied. Now, if the natural order is finished, district to High Court to Supreme Court. So once Supreme Court, the matter reaches Supreme Court, it is over. There is no higher than Supreme Court, right? So if a matter from district court has reached to High Court and then to Supreme Court, there is no upper court where the matter can be transferred to. In a way, the decision that Supreme Court is giving is final and binding. But even so, if people are dissatisfied either by the judge's behavior or the circumstances or something else, they may file a special petition. This is called special leave petition. If you are giving judiciary exams, or you may read about a law, right, which is a very significant part for an administrative officer, you will understand that whenever such scenarios happen, when the decision has came, which is final and binding, right? So, for example, let's take Narcotics Act. Their Supreme Court's decision is final and binding, right? So now Supreme Court said that this XYZ thing has to happen. The person is going to be convicted for certain amount of years in jail, right? After this has happened, the person may feel either the judge was biased or I missed some of the evidence, and now he cannot go back because he was given plenty of time. It was certain evidence that he got a hold of very late on. In such lieu, there is a provision of special leave petition. The special leave is similar to your motion, where we have a parliamentary motion where a member brings the notice of parliament on a certain issue which is going on.
You remember which motion I'm talking about? Parliament is going, and a member may feel that this is a particular motion, this is a particular issue that we need to discuss upon on, right? So he will introduce a certain motion to be passed in the parliament. Which is that particular motion? Any idea? You know it. I'm pretty sure. With the knowledge you have, you must be knowing about the motion. Correct. Right? The procedure is going on in the parliament, but the member feels no, this issue has to be discussed in parliament. So he will introduce the adjournment motion. Similar is special leave petition. What the person is feeling that this particular thing was not noticed in the original judgment, so he is knocking the doors of Supreme Court. Ki, sir, please take my sort of appeal to re-evaluate your stance. In case of Lok Adalat, when we are saying Lok Adalat is the final or is the final nail in the coffin, a person may feel that the coffin still needs to be opened. It needs to be examined. So in such case, a person can challenge the decision of Lok Adalat via the special petitions which are mentioned in the constitution, such as SLP, special leave petition. Did it clear you? And remember, I don't know about others, but me and Ultimate Ma'am, we both have a simple rule. If you are not able to understand, write no. There is no issue. There is no issue with us. If you are able to understand, then only write yes. There should not be an iota of doubt in your mind, right? Because a quanta becomes quantum very, very easily. Difference between appeal and challenge. Okay. So you are talking about, we said that a particular decision may be challenged, but not a decision would be appealed. See, the challenge is a layman term, right? A challenging certain Supreme Court's decision is a layman term. Appealing against a Supreme Court decision is a legal term, and a legal term finds its weight in constitution or statutes, which is your acts. So if I'm saying that I'm going to make an appeal against a particular decision and it's final and binding, right? Legally and or constitutionally, I'm not, enabled to do so, because appeal itself means that there is a provision in the constitution or your statute that you can do so. For example, as I said, there is a particular case of death by hanging. Lower subordinate court said that the person would be hanged. The law says that there is a provision of appeal for the person in the High Court, then in the Supreme Court. This is what I mean by appeal. That you can appeal against a certain verdict means that in the law it is mentioned that you can go to upper courts for resolution. But when I say challenge, challenge is a very layman term. You won't find challenge in any constitutional law or any legal law. They wouldn't say that you can challenge Supreme Court or you can challenge High Court. It is a very layman term. So if you come across a statement which says that Lok Adalat's decision could be appealed against in Supreme Court, no. By law, there is no provision of appeal. But if it says in a layman term, right, challenge, as I mentioned again and again, is a layman term. So if it says that the verdict of Lok Adalat can be challenged in Supreme Court, it can be via the access of backdoors, which are your special leave petitions. Are you able to understand the difference between appeal and challenge now?
पक्का? I mean, is the issue of Lok Adalat resolved? Great. Any हाँ अल्टीमेट में वो थोड़ा सा और लोग अनम्यूट कर दो एक बार. I think Nandika and Ananya were in the session. Right. Any other issue? If no, please write no. Right. After 2-3 no's, we will be ending the session.